We're at a very special place. जैसे कि ये कहा जाए, स्वागत है आपका बच्चों की प्यारी दुनिया में. We're at a very special place in Gurgaon called Mobile Creche. And I would like the camera person to pan on the messages that we have where मिलकर खेलना, मिलकर सीखना, हर दिन कुछ नया सीखो. Now these mobile creches, these are not any other child care centers. These are homes to the children of migrant laborers, people who are creating others' homes. Now, while their parents are working, these mobile creches are ensuring that children have a space which is safe and where they learn while also playing. Now, let's go here and have a look at what exactly this mobile creche holds. Now, you can see toddlers and children. You have a huge evergreen view here. This is a place where children have an open arena to play. This side we can see the creche which is there, which you have all the toddlers and the infants here, and you have proper trainers and in charges taking care of them. There, when we go inside, we have two classrooms, which is known as Balwadi and Bridge Course. Now, Balwadi is a classroom for children up to 3 to 6 years of age, and Bridge Course is a classroom for children up to 6 to 12 years of age. We would like to show what exactly these classrooms look like, what all do they have inside. Every day, 9 a.m., the creche starts with a prayer, and they have a proper attendance. Children are involved in a lot of activities. They have Gudiya Ki Chuniya, Akriti, Balwadi, Alamkari. They have a Samay Sarani. By Samay Sarani, they mean they have a whole curriculum for 9 to 4 p.m. where they're engrossed not just in studies, but in a lot of playful activities. And trainers attend all the children. They focus on each and every child. And here, if you can see this wall, it has a lot of messages, a lot of prayers that children recite right in the morning. When we go to this Bridge Course, this is another classroom which attends children of up to 6 to 12 years of age. And here we can see children engrossed in a lot of playful activities. Mobile creches में किस-किसको आना अच्छा लगता है? So you see, children are so enthusiastic to be here. We'll talk to one of the kids here and know what exactly they learn here. आपका नाम? मोहम्मद निसार. निसार, आप यहाँ पे क्या-क्या सीखते हैं? मैं खेल-कूद में गिनती और पहाड़ा, फिर उसके बाद मैं ABCD भी सीखा हूँ और यहाँ पर मेरे को आना बहुत अच्छा लगता है. और आपको टीचर्स सारा कुछ बताते हैं जो आपका सवाल होते हैं? हाँ. और आपको सबसे अच्छा क्या खेलना लगता है? मेरे को यहाँ पर कैरम बोर्ड. हाँ जी. So you see, kids are super excited to be in these classrooms, in this mobile creche. Now, we'll talk to one of the parents here, to just have a point of view as to what they think about these mobile creches where they, enroll their kids and how, their children's lives have been changed. Manisha ji हमारे साथ हैं. मनीषा जी, आप मुझे बता सकती हैं कि आप अपने बच्चों को मोबाइल क्रेश में काफ़ी समय से भेज रही हैं. क्या बदलाव आपने अपने बच्चों में देखा है? मेरा नाम मनीषा है. नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है. मैं बिहार से हूँ, दलसिंहसराय से. यहाँ 81 सेक्टर ग्लोमर सिटी में रहती हूँ. मोबाइल क्रेश स्कूल में मैं भेजती हूँ. यहाँ मतलब खेल में गाना सीख गया, खेलना सीख गया, खाना सीख गया. पहले बच्चे बोलते नहीं थे, अब बोलना सीख गया, डांस करना सीख गया. ये सब परिवर्तन मैं देखती हूँ. तो आपने अपने बच्चों में इतना परिवर्तन देखा है शुरुआत से और जब से वो होम क्रेश में थे. वी हैव मेमुल हियर हु इज़ एन इन चार्ज ऑफ दिस मोबाइल क्रेश. मेमुल जी, आप हमें बता सकते हैं, यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, इतने सारे बच्चे हैं, छोटे से लेके 12 साल की उम्र तक है. यहाँ पे इनका क्या करिकुलम रहता है? आप बच्चों को कैसे इन्वॉल्व रखते हैं? एक खेल पिटारा नामक आपका एक करिकुलम है, तो आप उसमें क्या इन्वॉल्व है? जी, मेरा नाम मेमुल है. सबको नमस्ते. और खेल पिटारा में हमारा पूरा दिनचर्या का, जैसे शारीरिक विकास से हो गया, मानसिक विकास, भावनात्मक, उसमें पूरा टोटल टाइम टू टाइम उसमें खेल पिटारा में हमारा एक्टिविटी है. उस हिसाब से हम फटाफट से एक दिन पहले तैयारी करते हैं और फिर बच्चों के साथ करवाते हैं. So you see, all these kids are involved in a lot of other activities, and
this is something which these migrant laborers have understood, that how important play is for these kids. And on the occasion of International Day of Play, all the viewers who are watching us, they can also be a part of this noble movement. You just have to share these placards that we have here, and you see it on the social medias, on NDTV and Bachpan Manao, and you can share these placards on the social media and be a part of this noble movement. Back to you, Nagma.